So basically, after 1 minute, it is expanding. For n equals to 1 equals 1, then it was distributed in like, so it says if n is small, we can't actually repeat the same thing to find the number of colored cells. So we have to find some formula. Uh, 9, 4, 4, plus 13, 1, 5, 13. And for 14, I guess it should be something like these two will get filled, this will get filled, they will grow upwards, will grow upwards as well. Why have they given small examples for when n is very small? Should have given big example. I think there's a pattern something like 1, 3, 5, 7, and then it will decrease in the same pattern. Okay, so 1, 3, 5, 7. I think I got it. Usually it's 0, and we're actually doing 2 and minus 1. Like here, 2 and minus 1, 3. We went down to 3. Then we will just double our answer. Okay, which is not very long. Let's see if this works. Oh, we wanted to multiply it with 2. 1, 5. Okay, that makes sense. Let's make it 3. See if we get 13. We get it. I think it should work. Taking long. One last time before we submit. Okay, this has to be. What? Okay, leave it. Just return the fucking end. I knew it. Count ways to group overlapping ranges. Okay. Multiple ranges between challenges to starting and then counts the down digits between starting and then are contained in the ith range. Okay, you are to split ranges into two, possibly empty groups. Is that?
each range belong to exactly one group. Any two overlapping ranges must belong to the same group. Okay. Ranges are said to be overlapping if there exists at least one integer that is present in both ranges. For example, okay, 2 and 3 is present in 1, 3 and 2, 5. Okay. Written the total number of these. The split ranges into two groups and sounds may be very large. Okay. What was that? Think about this problem. We have to return the number of ways in which we can um, divide the range into what? We have to split the range into two groups so that they're non-overlapping. Basic thing that comes to mind is to short them, and we keep on multiplying every possibility that we get. Like here, the question is if we have to short on the basis of start index or end index. Let's find this out. 16, 5, 15. And the same group. What? Okay, a range can be empty as well. So we can either put both of them in the left group or put both of them in the right group. Okay, that makes sense. 1, 3, 2, 5, 4, 8, and then 10, 20. Think about that. So basically, they are all actually overlapping up till up, except the last one. So, so one and three are overlap. So they must be in the same group. So we can try to think about this problem like a graph, and we're finding components. Okay, so they must be in the same group as well. Oh, so there is at least two-way, and based on the possibilities, we can either move them move them to the left and to the right. What were the conditions? Okay, so what we will do is we'll find the number of components we have, connected components, one, two, three, and we can do NCR, right? Because can we do combination here? Um, we actually have to divide them into two groups. In how many ways can we do that? Found connected components. Think about that. Suppose we have found, in this case, we found two components. We put one in the left, one in the right, second one in the left, first one in the right. And what about the other one? We had three. Oh, it's actually stars and bars. We have multiple connected components and we can put bars in between them. Uh, that actually has to be done in a manner such that it can be reversed. Like, अगर तीन elements हैं, तो we can put like तीन elements in the sense that कि तीन connected components है, तो हम पहले के बीच में एक bar लगा सकते हैं. So we're dividing
और हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आई थिंक आई कैर इट। सो बेसिक थिंग आई थिंक कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करना तो ईजियर होगा, लेकिन स्टार्स एंड बार्स वाले में आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स ट्राई दिस। इनिशियली काउंट अभी हमारे पास एक ही था। पहला हमने एलिमेंट ले लिया। Now we'll traverse from the syntax और हम चेक करेंगे that obviously x is going to increase। हमें basically y चेक करना है कि क्या if y a और b के लिए if b is less than or equal to y, because x a तो हमेशा x से बड़ा होगा, इक्वल होगा। वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। फिर a is less than तो नहीं होगा, इक्वल ही हो सकता है। Let's do this. In any case, we have a component, so basically we'll do nothing else, will increase our count और range क्या होगी फिर x equals to, so else के केस में भी हमें और भी कुछ चीज़ें करनी है। लगा मिनिमम ऑफ a comma b हो जाएगा हमारा मैक्सिमम ऑफ y comma x। Simply continue, otherwise count increment होगा। if they're not overlapping, x a के इक्वल हो जाएगा, y b के इक्वल हो जाएगा। So that way you can find the total number of components you have। अब क्या करना है, components को like for n components there will be possibility of n-1 bars, n-1 places जहाँ पे हम bars लगा सकते हैं, right? Let's see कि पहले हमारा count सही आ रहा है नहीं आ रहा। बेसिकली ये एक पूरा एक कंपोनेंट था सिंगल, यहाँ दो कंपोनेंट थे, हमने कुछ तो मिस कर दिया। if a is less than or equal to x और b is less than or equal to y, so शॉर्ट कराएंगे। आई थिंक 2 ही आना चाहिए इस केस में। बिकॉज y हमारा है 8 और x हमारा है 1, which is not greater than 10, 20। so ये condition satisfy नहीं हुई थी। minimum maximum I think it's good, short से इस काम कर रहा है। what is the problem then? सही आ रहा है हमारा। 1 take 1 3 2 5 what? X is supposed to be minimum of, so what is the problem?
ओह, हाँ हमारी कंडीशन ही गलत है। सो बेसिकली हमें बस एक ही चीज़ चेक करनी थी कि हमारा जो वाई है वो लेस देन greater than equal to a है। In that case, we know it's overlapping, right? So we got 1 8. Okay, cool. I think पिछले बार में हमने कुछ और देख लिया, but yeah, components हमारे पास आ गए थे total 2 components, which is correct. Let's add another. Let's 8 9 12. See, the answer is again 2, which is correct. 120, 122, 53. Why is it an okay? Right, so component हमारे पे आ चुके हैं, which is stored inside the count. Take it as. अब हमें जो करना है वो है स्टार्स एंड बार्स वाला। तो हमारे पास बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, मैं भूल रहा हूँ। सो हमारे पास लेट्स से काउंट इक्वल्स टू समथिंग, हम इनके बीच में बार लगा सकते हैं और हम एक ही बार लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम इट्स एक्चुअली ईजियर, हम बार लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली हम कितने बार लगा सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज देयर। एक ही बार लगाना है तो हम बेसिकली लाइक ऑर्डर अलग कर सकते हैं, तो विच इज़ अ प्रॉब्लम अगेन, which is again a problem. Because order यहाँ मैटर करते हैं, एक कंपोनेंट किसी भी तरफ जा सकता है, राइट? How do we find this? Let's see how am I doing compared to the people. I don't think बहुत लोगों का सी हुआ है, लोगों ने तो इसमें नहीं करा है। So basically हमारे पास रेंज आ चुकी है, हमारे पास कंपोनेंट्स आ चुके हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमें डिसाइड करना है, या तो लेफ्ट में जा सकते हो वो, या तो राइट में जा सकते हैं। हाँ, सपोज हमारे पास 2 होते हैं, 1 एंड 1, तो 1 लेफ्ट में जा सकता है, 1 राइट में जा सकता है। तो हमारे पास हर कंपोनेंट के लिए एक्चुअली 2 तरीके हैं, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा, और ये सबके लिए हमारे पास, राइट? सो आई थिंक मुझे अपना एक फंक्शन चाहिए, important.cpp, come on. Bin power is bin power. There it is. इसमें सबसे बड़ी जो मैं गलती करता हूँ, इसमें मैक्रो यूज़ करता हूँ, मुझे चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, मुझे मैक्रो डिक्लेयर करना पड़ेगा। Does it?
Let's see if we have any problem or not. What is the problem? Oh, I think we have to declare it static. इतना हार्ड नहीं है प्रॉब्लम जितना मैं इसे बना रहा हूँ. बट ओके, काफ़ी जल्दी हो जाना चाहिए था. अब बेसिकली हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न करना है पेन पाओ टू टू द पावर 90. मॉडर्न ने पहले से पास कर दिया है. I hope it works. We don't know answer to this question, but test cases, test cases 2 and 4. Uh, let's see, गड़बड़ तो नहीं है. Ranges, range हम सही फाइंड कर रहे हैं. What if कि हमारे पास एलिमेंट ही एक है? हम उसे लेफ्ट में डाल सकते हैं, राइट में डाल सकते हैं, साइड से. Cool. I hope it will reduce by a large amount now, because I don't expect कि बहुत लोगों ने कर लिया होगा थर्ड वाला. Oh my god, 1000. अच्छा, मैं काफ़ी स्लो था. It actually is more than 1000, लेकिन इसमें काफ़ी लेटेंसी है तो डिले होता है इसमें अपडेट होने में. आई स्टिल थिंक मेरी पेनल्टी नहीं आती, मेरी रैंक काफ़ी इससे तो काफ़ी बेहतर होगी. शिट. लास्ट प्रॉब्लम. Alice has an undirected tree with n nodes labeled from 0 to the -1. The tree is represented as a 2D integer array, edges of length n minus 1.